Good morning, students. Today I'm here to explain or solve the questions based on square and square root of exercise 3.2, class 8 math. So, first question is, mainly in your exercise, this is question number 3. Find the smallest number by which 1008 must be multiplied so that it becomes a perfect square. So, as you know that, what is a perfect square number? Suppose 60 is equals to, अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2. So 16 is a perfect square number because जितने भी हैं इनके पेयर्स बन सकते हैं. अगर हम दो नंबर्स का पेयर बना लें, 2 और 2 का एक पेयर, 2 और 2 का एक पेयर, तो ये दोनों अगर पेयर बनाते हैं तो इस तरीके के नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं. So come to the solution of this question. स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच हमें निकालना स्मॉलेस्ट नंबर. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1008. 1008. सो 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. नाउ 2 1 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, again 2 6 जा 12, 3 जा 6. Now 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, now 3 7 जा 21, and last one is 7. So after the prime factorization of 1008, can write here 1008 is equals to 2 into 2 into 2 into 2, how many 2? 1, 2, 3, 4, and into 3 into 3 into 7, right? These are the prime factorization of 1008. Now, make pair 2, 2, 3, but 7 is not in a pair. 7 is not in a pair, but the question is find the smallest number by which this number must be multiplied. So let us see here, 7 is not in pair. अगर 7 को पेयर में लाना है तो एक 7 और लिखना होगा, तो वहां लिखने के लिए हमको 7 मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा. तो मल्टीप्लाई ही कह रहा है ना, मल्टीप्लाई, सो दैट ना अगर एक 7 और मल्टीप्लाई कर दे यहां पर तो हमको ये सारे नंबर्स पेयर में हो जाएंगे, और पेयर में होने के बाद अगर हम 7 इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज सपोज देयर इज अ वेइंग मशीन, इफ here weight is 5 kg and here weight is 6 kg, then you can say that both are equal or not? No, because 6 kg and 5 kg. So if we add 1 kg here, then it becomes equal. Clear or not? Yes. So here what number we must be multiplied so that it become a perfect square? 7. So answer is 7 is the smallest number. 7 is the smallest number by which 1008 must be multiplied. इतना आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा. यहां अगर इसी में और क्वेश्चन पूछा जाए कि also find the square root of the perfect square number so obtain. A perfect square number so obtain, अगर इसमें कहते हैं so obtain, अगर ये मिलता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? इसमें जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ना होगा. तो यहां अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कौन सा नंबर आएगा? 7 8 56, 70071. That is the 7056. This
number is the perfect square number. Now this time. So, and find out the square root of this one. Square root of this one. Yes, simple. Square root sign like this. And here 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7. अब ये नंबर कब आया था? जब एक 7 से और मल्टीप्लाई किए थे तो 7. अब चेक करिए पेयर में है कि नहीं है. सारे पेयर में है. सारे पेयर में है तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा है तो यहाँ भी आपका स्क्वायर रूट लगेगा. सो नाउ अब जब स्क्वायर रूट लग जाता है तो इसमें से हम कैसे निकालते हैं? जो पेयर में रहते हैं उनमें से एक बाहर आ जाता है. स्क्वायर रूट हट जाएगा. एक 2, सेकेंड 2, 3 and 7. Now multiply all these numbers. 2 2 ja 4, 3 ja 12, 12 7 ja 84. Clear? So this is the square root of the perfect square number so obtained according to the question. This is the both the answer. One is 7 and one is 84. Clear or not? I think it is clear to you. Now come to the next question. And next question is find the smallest number. Find the smallest number. Find the smallest number by which number is what? Number is 2925. Must be multiplying so that ये मल्टीप्लाई साइन मल्टीप्लाई नहीं जाएगा यहां पर डिवाइडेड मस्ट बी डिवाइडेड so that it becomes a perfect square and also find the square root of the perfect square number so obtained. Same question but only changes in that question that here is a multiply but here divided. So same procedure. Solution. This question is question number 5 in book. Question number 5 in your book. Now solution is, now find out the square root of first by prime factorization. 2925. Clear? So divided by 2. 1 ja 2 1 ja 2, 2 4 ja 8, 2 6 ja 12. C. It is possible to divide this number by 2? No, because here it is not an even number. Here it is a 5. So this number is only divisible by 5. So divided by this number is divided by 5. First of all 5. Now divided by 5 is 5 5 ja 25, 4 5 8 ja 40 and 5 5 ja 25. So divided by 5 this one. Now again 5 1 ja 5 1 ja 5 and next divisor is what? 5 1 ja 5 and here 5 1 ja 5, 3 5 7 ja 35. Now check this number is divisible by which number. So divisibility test is you know very well that is 7 plus 1 8 that is 9. So it is divisible by 3. 3 ja 9 and 3 9 ja 27. 3 1 ja 3 and 3 3 ja 9. 13 is a prime number so 13 1 ja 13. So here 2925 is equals to, write down all the prime factors, that is 5 into 5 into 3 into 3 into 30. In this type of question, see divided by means इस नंबर को और ये नंबर दोनों आपस में इक्वल साइन है तो दोनों इक्वल ही है दोनों बराबर है. सो हम इस नंबर को
किससे डिवाइड करते हैं? डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बन जाएगा? बिकॉज ये पेयर में है, ये पेयर में, ये पेयर में नहीं. अगर मल्टीप्लाई करने को कहते तो यहाँ एक 13 से मल्टीप्लाई हो जाता और यहाँ 13 से मल्टीप्लाई होता, तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता क्योंकि 13 भी पेयर में आ जाता. लेकिन अब यहाँ दो तो पेयर में, हमें डिवाइड करना है. डिवाइड करने का मतलब अपॉन में करके कैंसिल आउट कर देना. तो जब डिवाइड किया जाता है तो किससे डिवाइड करते हैं? तो इसमें सबसे इसी को हटाना है, 13 को रिमूव करना है, तो डिवाइड किससे करेंगे? 13. सो 13 इज द smallest number by which divided so that it becomes a perfect. अब इसको अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? That will be 225. आप डिवाइड कर लीजिए, 225 आएगा. अब इसका स्क्वायर रूट अगर हमको निकालना हो तो सेम प्रोसीजर, 5 into 5 into 3 into 3, क्योंकि 13 हट चुका है तो इतना ही बचा है और 13 से इसको डिवाइड किए तो 225 आया. अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला था, क्या है? पेयर पेयर, एक 5 और एक 3, सो दैट द 50. दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर so obtained, and so obtained number is 225, and the square root of 225 is 50, and this is the perfect square number which we will get by dividing a smallest number, that is 30. So this is all about two types of questions in your book also. Try to solve yourself. Now come to the third question. Third question. Now third question is, here I am explaining third question, but in your book it is question number 6. Question number 6 is what? The area of the square field. The area of the square field is square field is 3136 square meter. Find the all sides and what is the length of each side. What is the length of each side? What is the length of each side? Question mark. We have to find what is the length of each side and the area of the square field is given. So suppose and square field like this. As you know that in a square shape, and if field is in a square shape, then all sides are equal. Suppose this is x, then it is also x, x and x. What is the area of the square field? Area of square field, here is square में how many areas are there? There are two areas. One area which is covered by this square shape, and another area is outside the square. Outside the square, there are two areas. So, but this area of square field is this area. Whole area is given, that is 3136. As you know that, solution of this one is area of square is equals to what? Side into side. This is the formula for the area of square, and side is what? X into x. And what is the area of square? Area of square is already given, so write down here 3136. Side into side, x into x means इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं. X into x is equals to 3136. It becomes x square is equals to 3136.
Okay, now x is equals to under root 3136. अब हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे निकलेगा, लेट अस सी। Three, 1, 3, 6 even number, so it is divisible by 2. 2 is the smallest prime number. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 8s are 16. Correct? Sorry, 2 6s are 12. Yes. See, 2 1s are 2, 1, 2 5s are 10, 2 6s are 12, and 2 6s are 12, and 1 2 8s are 16. Right? Now, again divided by 2. 2 7s are 14, 1 2 8s are 16, 2 4s are 8. Again divided by 2. 2 3s are 6, 2 9s are 18, and 2 2s are 4. Again 2, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 1 2 6s are 12, 196. Again 2, 2 9s are 18, and 2 8s are 16. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 1 2 9s are 18. Now 7 7s are 7, 1s are. Clear? Now x is equals to under root 3136. Can write, in spite of this one, square root of how many 2? 1 2 3 4 5 6. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 6 and 7 into 7 into 7. Right? Now, make pair 1 1 1 1. All are in pair. So, जो पेयर में होता है उसमें से 2 बाहर आता है. एक 2, next 2, next 2, and 1 7. So multiply all these numbers. 2 2 is 4, 2 is 8, and 7 8 is 56. So this is the required side of the area of a square field. X is what? X is the side of the square. So the answer is 56 is the side of the square. Meter. Okay, 56 meter is one of the side. So this is all about the exercise 3.2. आप इसमें 3.2 में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आप सॉल्व करिए और जो ना आए वो हमसे पूछिएगा. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.